Hey chicks, today I am back with a very new and interesting topic, resume writing. This is also part of letter writing and ये बहुत ही यूजफुल होगा in your future. आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, this will always be there with you. So let's see how to write a resume with an application. So here it is how to write an application with the resume. You will start from the principal. It's the sender's address like you do in every general application, and then school address will be of just 2 lines like the name of the school and then where it is located. After that you will leave just 1 line gap and then you will write the full date. After leaving 1 line gap, you will write the subject. Subject here would be that application to apply for the post of whatever post for you want to apply, you can write over here. And then leaving 1 line gap, you will write your salutation, which is very simply ma'am or sir. And then you will start your paragraphs. Over to our first paragraph. Here you will introduce your topic. As always, आपको यहाँ पे अपना topic, जो भी आपने टॉपिक लिया है, सब्जेक्ट लिया है, उसको इंट्रोड्यूस करना है. यू कैन स्टार्ट विद दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम विलिंग टू अप्लाई फॉर वॉट एवर पोस्ट. आप आगे अपनी पोस्ट, यू कैन राइट द पोस्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग एंड यू कैन ऑल्सो राइट दैट आई चूज योर एसोसिएशन एज इट इज गुड फॉर मी, बेटर ऑप्शन फॉर मी. आप ऐसे लिख सकते हो जस्ट 2 to 3 lines in the first paragraph and then switch over to next paragraph. Paragraph 2 is basically description of the topic. इसमें you can describe the post आप जिसके लिए आप खुद को अप्लाई करना चाहते हो. It's just a small description. I have a good knowledge or understanding of, आप ऐसे start कर सकते हो. For example, you are applying for the post of an art teacher, तो आप लिख सकते हो that I have good knowledge or understanding of different kinds of arts या फिर sketches. You can use these all things. And this should also be of just 2 to 3 lines because आप इसके बाद एक line लिखोगे that you will get further information with the resume enclosed. This line says कि हाँ अपने resume आपने enclose किया हुआ है अपने application के साथ. So there is no need to explain much in this application. The person reading the application can switch over to resume for your further information. And then you can write hoping for favorable response. आप ऐसे एंड कर सकते हो इफ यू वॉन्ट. एंड देन लिविंग 1 line gap, you can write regards. You will not write yours sincerely or thanking you. You will just write regards, your name, address, email and contact number are necessary because जिस भी एसोसिएशन में आप ये रिज्यूमे या लेटर भेज रहे हो उसके पास एक कॉन्टैक्ट करने का कोई भी मीडियम होना चाहिए. So these are the informations how you can end your application. And at last you will write enclosure CV, that after this application I had enclosed and CV also with it. The person can go through it. So now we will see how to write the CV. Let's switch over to it. So coming over to CV, that is also our resume. We will start with name, date of birth. This basically includes all our personal information which is required by any of the institution or association. So you will start with name, date of birth, mother's name, father's name, gender, religion, nationality and hobbies. Now you must be thinking what is nationality. तो इसमें आप लिखेंगे whatever country you belong from. Like for example Indian. So these are the basic informations which you can give. And then continuing contact address, you will give your contact address. This is divided into 2 parts. One is permanent address and one is contact address. कई लोगों का ऐसा होता है कि 2 एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट और एक जो अगर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है तो डिफरेंट एड्रेस होते रहते हैं. तो आप वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो इन 2 पार्ट्स. एंड देन फ़ोन नंबर एंड ईमेल. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपने ये ऑलरेडी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द नीड ओवर हियर. सो समटाइम्स व्हाट हैपन दैट द रीडर ओनली रीड्स द एप्लीकेशन or only reads the resume. So to be on safer side, we should mention these both in application as well and in the CV also. With the continuation in the CV, you will provide your educational qualification. For this, you will make a table. This is a very organized way of presenting this particular information. So what you will do is first is serial number, then whatever name of the exam, whichever exam you have given, for example class 10, and then what was the board or the university, for example CBSE,
Then year of passing, in whatever year you have passed it out, you will write that. Then it's subjects offered, subject जो भी आपने offer किए थे, for example हिंदी, English, math, science, you can write all that over here. Then marks obtained, आपके कितने marks आए हैं, तो it's 95. Then after that maximum marks, कि उसमें कितने marks का था that particular exam, so you can say at 100 marks. जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, these all are of 100 marks. 95 out of 100 आपके मार्क्स थे, तो you can write like this. And then percentage, in percentage you will write whatever the percentage was. For example 95% was your total percentage of marks. Adding to educational qualification, now you will mention your experiences. आपने जहाँ पे भी काम किया है आप वो यहाँ पे mention कर सकते हैं. Then your strengths and your weakness, आपके जो भी सब्जेक्ट्स में स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो, किसी में आप अच्छे होंगे किसी में बुरे होंगे, यू कैन मेंशन इट ओवर हेयर. देन योर स्पेशल स्किल्स, कई लोग होते हैं जिनको डांसिंग सिंगिंग भी आता है एज एन एक्स्ट्रा स्किल्स, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. एंड देन यू विल राइट योर डिक्लेरेशन. दिस इज द लास्ट लाइन एंड दिस इंक्लूड्स दैट आई हेयर बाय हैड रेड ऑल दी अबव गिवन इन्फॉर्मेशन. आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि हाँ ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये मेरी पढ़ी हुई है, ये मैं जानता हूँ, एंड दीज ऑल आर ट्रू. तो आपको यहाँ पे ये डिक्लेरेशन देना है. एंड देन यू कैन राइट योर सिंसियरली एंड देन योर नेम. दिस इज हाउ यू विल एंड योर CV. नाउ what you have to see is that these all the colons you must have observed this from starting to the end, that all the colons are aligned in the same way. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए. जैसे ये लास्ट कॉलम जो मेरा जा रहा है वो यहाँ पे है, तो मैंने सबको इसी के अकॉर्डिंग रखा हुआ है. एंड वन मोर थिंग, वैसे तो लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू लीव एनी लाइन, बट जस्ट टू मेक योर प्रेजेंटेशन लुक मोर बेटर, व्हाट यू कैन डू इज you can leave line after this table and you can leave line after special skills. While writing a declaration you can leave line over here, but it's not very necessary. Just to make your presentation look good you can do this, and this is how your CV will be completed. I hope today's content was useful and helpful for you all. So keep motivating and be there with Chick Forum family. So stay safe, stay healthy.